Assalamu alaikum and welcome to another episode of Discover Being podcast. और आज हमारे साथ we are very proud to have Pakistan's first female head of e-commerce division of a corporate sector. We have this head of e-commerce, Karam Studios, Nida Siddiqui. How are you? I'm good. How are you? Thank you so much for accepting our invitation and being part of our show. And we would like to know your early life and your early education, where you were born, and how did you get to this Karam? Well, thank you so much. I'm extremely grateful for you to invite me over. Okay, so I've done my O-levels, A-levels, basic stuff, and then I've done my undergrad and postgrad from Zabas. And I started working back in 2013. Okay. So I started off as a content copywriter slash digital strategist for a while. And then while I was working for different, beauty platforms and stuff like that, I realized after a while that I wanted to do something more concrete. And by no means I mean to be condescending, or by no means I'm looking down upon any other individual's career path. But I realized that, I might as well get into something that would just give me the right direction, and I would just do something that will make me learn a new skill or two. Because ये उस time की बात है, 15-16 की बात है, जब a lot of fashion platforms were there on Instagram, and then you would go to different events there. I mean, there were a lot of Instagram journalists at that point, and you would just go to one event or the other and then cover those events. Oh, okay. And while doing that, I realized that it may not be my cup of tea for a longer time, because मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ऐसा करना था जो कहीं would make some difference somewhere. And at that point, I realized e-commerce was booming. This is back in 2015-16. Daraz was at full boom. Yayvo by TCS was launching at that point. And I joined TCS then in 2016. Okay. And that is my journey towards e-commerce. Okay. At TCS, I was a category manager. I was looking at women's fashion. So I had about about 40-50 vendors under me. उसमें tier 2 भी था, tier 3 भी था और tier 1 भी था. Tier 1 में जैसे अलकरम, गुलेमा, तारा टेक्सटाइल्स, तारा स्टूडियो, ये सारे brands थे. और tier 2, tier 3 जो आपके different vendors होते हैं जो who want to join the marketplace. I had those. वहाँ से I actually decided to move on to the brand side, because मुझे marketplace का experience हो चुका था. Sorry, you did your graduation in business side, like BBA? No, actually I haven't done BBA. What I've done is I have done BS Social Sciences and Economics from Zabas, and after that I did my Masters in Advertising, MBA Advertising from Zabas again. Okay. तो वहाँ advertising क्यों choose किया था? Because I realized I started working. तो मैं ये copy writing, content writing, digital strategy, social media management start कर दी थी. Okay. तो वहाँ से I actually thought might as well just get a degree in it. So फिर वहाँ से there was no looking back. So advertising and then e-commerce, like it's a part of e-commerce. Advertising is a part of e-commerce. So how different it was to get into this. Usually we see female they get into designing and everything. So how is this marketing and then e-commerce? Like I said, I was already part of content creation anyway, right? मैं वो digital सारा content creation तो मैं करी, strategy तो मैं कर ही रही थी. But मुझे ये realize हुआ कि I wanted to actually at that point I realized कि अब these are my young years. इन सालों में रगड़ा is the word I want to use here. वो जब तक आपको नहीं लगता, you will not be able to brush your skills. I mean, how far could I have anyway gone with just content and strategy? अब तो खैर the world is all about content curation. But I do not have a YouTube channel, and I don't see myself having one near future. So I realized I want to do something that is not very much saturated at that point. और वहाँ से कुछ नया स्किल एक सीखने को मिल जाएगा. तो फिर जब मैंने TCS का ये वो ज्वाइन किया, वो मार्केट प्लेस थी. आपको वहाँ पे end to end vendor management करनी होती थी, from onboarding the vendor to have their assortment up and running on the website, catalog management उसकी, फिर वहाँ से उसके sell throughs manage करने, उसका stock inventory levels manage करने, then towards the लास्ट माइल डिलीवरी, और उसके बाद जो एंड टू एंड कस्टमर सर्विसेज, अगर कोई आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, तो वो सारा जब एंड इवन के वो लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी हमारे पेपर वर्क होता था, वी हैव टू डू दैट आवरसेल्व्स विद द वेंडर्स. तो इतना एंड टू एंड चीज़ें थी दैट आई एक्चुअली गॉट अ फुल एक्सपोजर ऑफ व्हाट इज इट लाइक टू बी behind the wheels of an online business. And from there I got into Bonanza.
I actually approached them to have them So onboarded. why particularly this clothing side, like clothing sector? Why clothing? Because fashion का background था from the going to events and everything. And then जब Yayvo में भी गई तो वहाँ पे marketplace पे भी it was all about women's fashion. That was a category I was handling. तो What exactly like happened with Yayvo? Like it was connected with one of the largest brand in Pakistan, TCS. Yes. And how did they end it so abruptly? Well, to be very honest, I think I'm not the one to say what really happened with them, but it was an ambitious project. It lasted for a good about 4-5 years. 4-5 years, yes. Then I think TCS went back to their original business of last mile 3PL and cargo. तो वो उसको sustain नहीं कर पाए. Okay. I think that's all I can say. So how do you see like traditional businesses जो हैं हमारे पाकिस्तान में, like Al-Karam, Gul Ahmad and other companies, इनका their journey towards from the traditional side to this digital side, how did that they have covered well, or they still need some space to get into it? To be very honest, अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में .com और e-commerce अगर चल रहा है सबसे ज़्यादा किसी का, तो वो तो फैशन इंडस्ट्री का ही है. वो खवातीन के से ज़्यादा चल रहा है. I would say, but जो main e-commerce अभी चल रहा है ना, after any marketplace, like I think Daraz एक main major marketplace, I don't mean to do anything else about any other marketplace, but ज़्यादातर वो textile का ही है, उस sector पे e-commerce main चल रहा है. And it started picking up after 2017 and 2018. Yes. Exactly. That's when it picked up, and I think. And you started your journey with e-commerce. I think in those days जब start हो रहा था initially, it was like okay, good. और बहुत कम खवातीन होती थी marketplace side पे. तो वैसे तो obviously it's a marketplace with the different departments, a lot of females in it. Okay. Core vendor management and core e-com, जहाँ पे आपको warehouse में भी उतरना है, आपको ब्लैक फ्राइडे के ऑर्डर्स भी पैक कराने हैं और देखना है एंड टू एंड क्या हो रहा है, वो बहुत कम उस वक्त खवातीन थी जो कर रही थी. एंड आई एक्चुअली रियलाइज बहुत सीखने को मिल रहा था. आई डिड नॉट इवन नो हाउ टू रन एक्सेल एट दैट पॉइंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो हाउ कॉम्पिटिटिव इट वाज टू गेट इनटू दैट मार्केट वेयर जो है वो आपके. इट इज सुपर कम्पिटिटिव बिकॉज इट्स ऑल मेन. Yes. Not anymore. I must say, I was the first. The culture has changed right now, but not back in 2015 or 16. Yeah, उस वक्त नहीं था, because आपको अपने courier partner से भी बात करनी है, आपको अपने operations के guy से भी बात करनी है, and they would sometimes not take you seriously कि क्या उनको क्या पता warehouse में क्या होता है. Abby बोल रही है culture. वो एक चीज़ थी, एक बहुत ज़्यादा gender gap और वो सब चीज़ें थी जो बहुत difficult थी उस point पे. And transportation is the one part that usually वहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग होते भी नहीं होते, ऑप्शन वहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल है. Okay. So I'm not sure if you have checked or not, but I think you are the youngest female head also of e-commerce. I will not say, I don't know, let's not be ageist, but what I would say is I think up to there are 2-3 more female head of e-commerces who have entered the business, and I'm very happy that there's more female representation in this business or in this field now. But back in 2018 when I joined, 17 actually, when I joined Bonanza, I was the first female head of e-commerce. And बाकी सारे brands Bonanza as a first female head of e-com. And उसके अलावा अगर बाकी के अगर competition brands देखे जाएं तो वहाँ पे सारे मर्द हजरात ही थे. और I was able to retain that up until what? Probably last year तक. Okay. और अब lot of females have started joining the business, and I'm very happy. So and that too from Karachi वालों को एक बड़ी particular. लाहौर कराची नहीं लाहौर. नहीं, you are from Karachi. हमारे यहाँ बड़ी शिकायत होती है कराची वालों को कि कराची वाले जो है वो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे इतने ज़्यादा नहीं देखे जाते. यहाँ पर भी जो है वो ज़्यादातर बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं, तो इट्स पॉइंट के वहाँ पे कराची के हिसाब से होते हैं. So how do you see that evolution of e-commerce in Pakistan? We see हमारे यहाँ ट्रेडिशन ऐसा है कि जब तक ख़ास तौर पे आपने बात की क्लोथिंग के अंदर, और वहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, तो वी हैव दैट ट्रेंड कि नहीं भाई जब तक सामने कोई चीज़ नहीं होगी देखने की तब तक हम वो चीज़ पे एक्सेप्टेंस नहीं होगी या भरोसा नहीं आएगा. अदर देन दोज बिग ब्रांड्स, मैं अगर कोई आम ब्रांड की बात करूँ, तो हाउ डू यू सी दैट इन लास्ट like 10 years, ऐसे 8 or 10 years? I think COVID really helped change e-commerce game in Pakistan, because everybody was sitting home, they were doing all these boredom shopping, और उसके बाद से people actually started shopping online more. तो जो e-commerce का business आपका COVID से
से पहले लेट्स से 8% या 10% होता था ऑफ द एंटायर रिटेल बिजनेस. कोविड में ऑब्वियसली तो कोविड में सिर्फ यही था, मगर उसके बाद भी द फॉलोइंग ईयर भी द शेयर बिकेम अप टू 30-35% फॉर सम कंपनीज, एंड फॉर ऑन एवरेज वाज अबाउट 20%. And at the time of COVID, you were in Alkaram or Bonanza? Bonanza, okay. Bonanza. And what was the ratio, like if I say 80 to 20%? जी यही था. Okay. और कोविड के टाइम पे 30% भी एक मरतबा गया है. और इसके बाद अगर अब आप बात करें रिटेल ब्रांड्स की, उसमें ब्रिक एंड मोटर वर्सेस ऑनलाइन, तो द गुड नंबर, द एम्बिशियस नंबर दैट पीपल आर एमिंग फॉर इज 25%. And what's the current number, like percentage? I will. Okay, so even for let's say the brand that I'm working for, the brands I've worked for already, it was about good 20-25%. In-store versus online? In-store versus online. Okay. And what do you see that is it more feasible for the companies to, push the e-commerce side more, like expenses and everything, operating expenses, or they do it to, it's more challenging? I think with e-commerce, I think it's a better P&L to manage, to be very honest, because आपके overheads कम होते हैं. You have digital. You have to do manage your spending, you have to manage your tech. उसकी आपकी पेमेंट्स होती हैं, फिर आपका वेयर हाउस की कॉस्ट होती है, फिर आपकी 3PL की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होती है. उसके अलावा आपके पास कोई रेंटल्स नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा हेड काउंट नहीं है जो आपने लोग स्टाफ हायर करना है, आपके पास बिल्स नहीं है जो आपने इतने यूटिलिटी बिल्स नहीं है जो इतने पे करने हैं. तो P&L में अगर आपने अपने रिटर्न्स और अपनी कैंसिलेशंस कंट्रोल की हुई हैं, और इफ यू हैव अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी अराउंड, ई-कॉमर्स बिजनेस इज एक्चुअली मोर लुक्रेटिव देन रिटेल बिजनेस. एंड आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट इट एक्चुअली इज ट्रू. But don't you think that the logistics side of Pakistan, I don't think that it's mature enough to handle that amount of number that groups are aiming into? To be very honest, सर्विसेज यानी कि लॉजिस्टिक्स में बहुत मसले मसाइल हैं स्टिल. अच्छा, I'll tell you उसके मसले मसाइल क्या है, पर मैं ये भी बात कहूँगी कि कोविड के टाइम पे तो सब कोई रेडी नहीं थे, कितना बड़ा क्वांटम आएगा उनके पास. बट कोविड के बाद से लॉट ऑफ 3PL कंपनीज हैव पॉप्ड अप, एंड दे हैव ऑब्वियसली आर्म्ड अप एज वेल, एंड दे हैव इंक्रीज देयर वर्क फोर्स. तो राइडर्स की जो फोर्स है उनकी काफ़ी सबकी इंक्रीज हुई है. तो मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि आप किसी एक या दो 3PL पार्टनर के साथ काम ना करें. मैं हमेशा 4 से 5 का पूल रखती हूँ अपने पास टू डिवाइड द लोड प्रॉपरली. एंड ऑब्वियसली ऑन द मेरिट बेसिस कि जिसका जो है कन्वर्जन रेट या जिसका आप डिलीवरी जो रेट है वो सब अगर 90% से अबव है तो दे आर ऑब्वियसली परफॉर्मिंग बेटर. इनके मसाइल ये होते हैं कि फिक्स स्टेटस होते हैं, अटेम्प्ट नहीं किया डिलीवरी का तो आपको रिटर्न आ जाता है. तो हाउ आई गेज इट कि मैं रिटर्न रेशो चेक करती हूँ, रिटर्न रेट चेक करती हूँ हर 3PL का, और अगेंस्ट वट एवर शिपमेंट्स यू हैव गिवन देम. अगर किसी का रिटर्न रेट ऑब्वियसली ज़्यादा है तो दैट्स व्हेन वी डू मंथली रिव्यूज विद देम टू आस्क देम कि व्हाट्स अप. Okay, so how do you target the rural areas of Pakistan? वहाँ पे तो if I talk about the largest company, logistic company of Pakistan, उनके साथ तो ये है कि they don't even call the customer, तो वहाँ पे तो हाउस नंबर्स होते नहीं है. ये अच्छा, वहाँ पे ये होता है कि फिर वो जो नियरेस्ट आपका ड्रॉप स्टेशन होता है वहाँ पे बता देते हैं. ये हमें बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है रिमोट एरियाज के साथ, बिकॉज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फला दुकान वाले को दे दें, बेकरी वाले को दे दें, एंड दे विल कलेक्ट इट. वो तो वो एक इशू नहीं है. नहीं, वो एक इशू होता है. और एक और मसला ये है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो रिमोट एरियाज में एक्सेस ना बहुत ही कम, एक दो ही 3PL पार्टनर्स जिनका है. अब उनकी मोनोपोली कह लें आप उसे. आई मीन आई हैड अ लॉट ऑफ 3PL पीपल माइट बी लिस्निंग टू इट एंड दे विल बी लाइक शी इज बीइंग स्ट्रिक्ट अबाउट इट, बट आई मस्ट से कि उनका है तो वो आप उन्हीं के साथ फिर बाउंड होते हो काम करने के लिए. एंड आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड बाउंड, पर आप होते हो उनके साथ, और फिर आपको वो स्टेटस के साथ से डील करना पड़ता है. यू मेक 3 अटेम्प्ट्स ऑफ डिलीवरीज, यू कॉन्टैक्ट द कस्टमर थ्रू द पिकअप एडवाइस कि आपके पास कोरियर पहुंचा भी नहीं पहुंचा, आपको मिला कि नहीं मिला. तो मैंने तो अपनी जो CS की टीम है हमने उसको CS ऑप्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिनका काम ही है कि वो 3PL पे भी शदीद सख्त नज़र रखे हुए हैं और अपने कंप्लेन मैनेजमेंट पे भी शदीद नज़र रखे हुए हैं. इसीलिए हमने अपना रिटर्न और कैंसिलेशन रेट अच्छा खासा कम, समझिए आप 5-6% में मैनेज किया हुआ है कंबाइंड. Okay. So we have, according to our viewers, we have most of them are in the age of 24 to 28. So they would like to know all the terms that you're using, the 3PL. अच्छा, 3PL से मेरा क्योंकि we are the aim of our podcast is to spread the awareness. 3PL से मेरा मतलब है आपका लॉजिस्टिक पार्टनर जो होते हैं, कोरियर कंपनी जो होती हैं, उन्हें हम 3PL कहते हैं. Okay. So logistic में don't you think that's I won't use the word mafia, that might be an issue, but mafia नहीं थे, लेकिन कुछ कंपनीज की अदर देन रूरल एरियाज के अंदर जो एक डोमिनेट करते हैं, उसका कोई अभी करंट जो आफ्टर कोविड जो है वो कोई ऐसा सॉल्यूशन आया है या स्टिल दे आर रूलिंग दैट? Still ruling that. Still ruling that. And do you see their service have been improving?
services. We are asking because the next couple of guests are related to logistic companies, so we will be asking this particular question with them also. See, to be honest, अगर क्वांटम उनके पास ऐसा होता है कि वो हैंडल कर सकें तो फिर तो ऑब्वियसली वो उसको डिलीवरी उनका टाइम टैट कम हो जाता है, टर्नओवर टाइम जो होता है डिलीवरी का वो कम हो जाता है. और दैट्स हाउ आई गेज के मैक्सिमम आपका 5 to 6 days में इवन रिमोट एरियाज में ऑर्डर पहुंच जाना चाहिए कस्टमर के पास. बट ये है कि अगेन रिमोट एरियाज में हर किसी की एक्सेसिबिलिटी है नहीं, कुछ 2-3 ही 1-2 ही इनफैक्ट लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं जिनकी है, तो अब एवरीवन हैज टू वर्क विद देम. Okay. So we see that e-commerce policies in Pakistan, they are not, even if I'm not sure if there are one, but even if they are, I see that they are very immature right now to जिस पर हम rely कर सकते हैं. तो what do you think government के अंदर e-commerce policies या even any body जो ये इस पे काम कर रही हो to make some regulations? There are some associations pertaining e-commerce, but I tell you what, जैसे अभी dollar rate was fluctuating. डायरेक्ट क्रेडिट लाइंस लोगों को नहीं मिलती हैं, ब्रांड्स को नहीं मिल रही, सबके एड्स रुके हुए थे बिकॉज दे वर वर्किंग विद वन सर्टेन एजेंसी ओनली. वी हैव आवर ओन क्रेडिट लाइन in both the brands that I work for. They've had their own credit line, तो हमें मसला नहीं, हमारे एड्स नहीं रुके. प्लस फिर अगर आप देखें क्रेडिट कार्ड पे उन्होंने लिमिट लगा दी कि $30,000 से ज़्यादा एक साल में ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल कार्ड पे होगी तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. कॉर्पोरेट कार्ड्स बंद कर दिए हैं. अब कॉर्पोरेट कार्ड्स बंद कर दिए तो अगर हमारी शॉपिफाई की पेमेंट है या कोई भी इस तरह की पेमेंट्स है तो वो तो अब हो ही नहीं रही, तो फिर आपको अपने इंडिविजुअल कार्ड संभाल करने पड़ रहे हैं फॉर कंपनी पर्पसेस. तो उसमें भी लिमिट है कि $30,000, अगर वो रीच हुई तो कार्ड बंद हो जाएगा. सो अब ये चीज़ें ऑब्वियसली दे आर नॉट वेरी इनकरेजिंग एंड दे ऑब्वियसली and then obviously the tax rates are way too high कि आपको अपना स्पेंड परसेंटेज इस तरह मैनेज करना होता है उसके ऊपर कि आप अपना स्पेंड भी कर रहे हो पर टैक्स भी अलग लग रहा है. और अगर आप ये देखें कि अब जो रिटेल के ऊपर टैक्स है वो लास्ट टाइम इट वाज 12%, अब वो 15% हो गया, 3% मोर. एग्जैक्टली. सो जो आपके टारगेट्स आपको मिलते हैं या कंपनी का जो एक प्रॉफिट जिस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी जा रही होती है उसमें 3% तो आपने और ज़्यादा एक डेंट और लगा दिया है. सो ये कुछ पॉलिसीज इस तरह की हैं जिसकी वजह से आई फील पेपैल इज स्टिल नॉट इन पाकिस्तान. एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, लेकिन देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे यू कैन डायरेक्टली पे टू फेसबुक फॉर देयर मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग कॉस्ट. We do that too. Okay. So but hardly why few you using brands, credit cards then? No, hardly few brands have a credit line. Like we do at Al-Karam, we did at Bonanza, but not every other company has one. Exactly. So वो bound होती हैं किसी एग्रीगेटर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ इसको यूज करने में. ओके. सो हाउ एग्जैक्टली दैट करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, स्पेशली दिस डॉलर थिंग, ये कितना इफेक्ट किया है? बिकॉज इफ आई सी कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इफ़ यू रन एन एड तो अगर वो $1 180 का पड़ा था तो अब वो इट्स अराउंड 300 जी. तो वो इम्पैक्ट किसका है और वो क्या कस्टमर की तरफ गया है या यू कंपनी एज बेयर कर रही है इन सारे लॉसेस को? सी मार्केटिंग कॉस्ट तो ऑब्वियसली कंपनी की अपनी है, राइट. आप अपने प्राइस नहीं, इवेंचुअली कंपनी अगर मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी. प्रोडक्ट की, अच्छा दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन. प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है सब इस अब की बार सारे ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हाई है. अगर हम इन्फ्लेशन रेट को टेकिंग इट दैट इनटू अकाउंट अगर हम अपने प्राइसिंग भी प्रोडक्ट की बढ़ा लें तो ऑब्वियसली आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट. तो अब की बार मोस्ट कंपनीज हैव रिड्यूस देयर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज. जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ आई वाज मेकिंग 50% ओवर समथिंग, आई रिड्यूस इट टू 45% नाउ. सो द कंपनीज हैव टेकन सम हिट. जो सेल्स टैक्स है वो तो ऑब्वियसली कस्टमर के पास तरफ पास ऑन होगा. But because of inflation, you cannot even it's a dangling situation. You cannot even increase the pricing as such. वरना जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारा अगर 3 पीस अगर किसी अब एक नॉर्मल जो हमारा रिटेल इंडस्ट्री है उसमें 3 पीस की प्राइस जो है वो 2290 है. इट्स अ स्वीट स्पॉट. अगर हम उसको बढ़ा के 27-2800 कर लेते हैं, 3000 कर लेते हैं तो आपकी कंपटीशन ने तो अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई है. आपका रेवेन्यू तो शायद जनरेट हो जाए पर जो वॉल्यूम है वो आपका नहीं होगा, तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा पाएंगे आप अपनी.
तो ये एक ज़रा एक सिचुएशन है जहाँ पे कंपनीज ने अपने प्रॉफिट पे भी हिट लिया है, अपने प्रॉफिट्स कम किए हैं ताकि वॉल्यूम आ सके. एंड प्रॉफिट एज इन जस्ट इन लाइक ऑनलाइन और इन स्टोर्स आल्सो? ओवरऑल प्रोडक्ट जो भी आपकी हो, चाहे वो कपड़ा हो या किसी भी कोई भी और चीज़ हो. नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू नो कि जैसे हमारे पास एक वो जो ई कॉमर्स का एक बेसिक बेनिफिट है कि यू डोंट हैव टू पे द रेंट्स और फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है उसकी नहीं होती. बट अगेन जो हमारे करंट कंडीशंस हैं उस पर जो डॉलर की रेट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्सेस, आई एम नॉट श्योर इफ कॉर्पोरेट सेक्टर इज बीइंग चार्ज एक्स्ट्रा एज अ डॉलर की प्राइसेस है. लाइक इंडिविजुअल अगर कोई एड रन करता है फेसबुक के ऊपर तो द कंपनीज बैंक आई थिंक चार्ज अराउंड 5 to 6% एक्स्ट्रा ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट. आई एम नॉट श्योर इफ कॉर्पोरेट इज दे आर डूइंग विद द कॉर्पोरेट ऑल्सो, लेकिन वो कॉस्ट जो है वो वायर पेमेंट्स अगर हम कर रहे होते हैं तो फिर ये आपका बैंक का ही मसला नहीं. ओके, नो, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो सेम नहीं हो गई बात कि आपके जो है वो डॉलर प्राइस की वजह से जो हमें रेंट लेके शॉप के चार्जेस पे करने हैं वो नहीं, इक्वल? वो एक्चुअली उससे फिर भी कम है क्योंकि हम जो स्पेंड परसेंटेज अपनी रखते हैं वो हमेशा एक सर्टेन परसेंटेज होती है ऑफ योर एंटायर नेट सेल्स. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर मेरी लेट्स से नेट सेल मंथ की है, ओके, एक बॉल पैक फिगर मैं आपको बताती हूँ. अगर मेरा जो भी नेट सेल है मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसका 10% हाइपोथेटिकली 10% मेरा नेट स्पेंड होगा. ओके, अब जो मैं सेल रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ, नेट ऑफ टैक्सेस, नेट ऑफ कैंसलेशंस, नेट ऑफ रिटर्न्स, जो भी उसकी अमाउंट आएगी उसका 10% मुझे अलाउ है कि मैं अपना मार्केटिंग बजट उसको बना सकती हूँ. तो मैंने अपना वो तो मेंटेन 10% पे ही किया हुआ है. सही है, डॉलर की प्राइसिंग जरूर बढ़ी है, मगर फिर ओवरऑल जैसे हमारी बिजली की हर चीज़ की प्राइसिंग बढ़ी है तो उस हिसाब से फिर भी ई कॉमर्स विल हैव अ बेटर P&L. Okay. If it's smartly managed again. Okay. So how supportive these tech giants are like Facebook, Instagram in terms के अगर हम बात करें अपनी neighbor country की, तो they are very supportive with the corporate side of their country. India की बात करें तो how supportive they are with the corporate sector of Pakistan? Like do you have directly connectivity with them or also no? I would like most certainly mention Google because they keep visiting us every 6 months and we have our POCs there. I think Google also have a team here, like a community team also. They have a team in Lahore, but हमारे जो POCs हैं वो Singapore based हैं. Okay. And they visit us like every 6 months and we are like in close contact with them. We have a WhatsApp group with them, so we share daily updates with them. With Facebook, we do not. Facebook has changed their whole, the way their teams used to be managed. Earlier यहाँ ही के 2 लोग थे, अली खुर्शीद थे उसमें और एक और थे जो कि पाकिस्तान के थे, वो वहाँ पे थे और वो POCs थे यहाँ के SMEs के. मगर अब उन्होंने अपना थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है तो वहाँ पे यू कॉन्टैक्ट देम थ्रू हेल्पलाइन एंड थ्रू कॉल सेंटर. तो वहाँ पे आपके पास कोई अब POC नहीं है सच फेसबुक में, बट दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे गेट बैक टू यू इंस्टेंटली. एंड सो इज द केस विद Shopify. वहाँ पे भी आप डायरेक्ट उनके Shopify हेल्प सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दे गेट बैक टू यू इंस्टेंटली. The thing is that we recently had a podcast with one of the person related to Google, that their complaint is that the marketing budget of the corporate sector or even in terms total Pakistan का जो है is not enough that we can value them in terms कि अगर आपकी नेबर की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें. बिकॉज अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे $2 लाख किसी कंपनी का बजट होता है इन अ मंथ, देन वही अगर किसी इंडिया की छोटी सी कंपनी का बजट भी इससे बहुत ज़्यादा होता है. तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि वो एक उनके लिए एक सर्विसेज देना आसानी हो जाती है. लेट्स रिफ्रेज दिस क्वेश्चन के पाकिस्तानी इंडस्ट्री का मे बी अलोंग दोस लाइंस. अच्छा, obviously see India is a volume based, it's a huge economy. Pakistan is a crippling economy. It's very sad to say that, but यहाँ पे अगर हमारे FMCGs की बात करें, so they have massive budgets. Okay. So it's not like that Google or any other Facebook or any other partners are not interested in working with us, so they find us not ordinary. Because like I mentioned earlier, Google team visits us every 6 months and we're very super close to them. Okay. And that's also because the kind of spending that retail sector has been doing. And more than retail, FMCGs have huge budgets. So that's not the case. Based on whatever our economic conditions are, based on our current economy, I think Pakistan is spending as much as it should be. According to the volume and the population. Exactly, because I tell you, with Google and Facebook, उनको तो पैसा ही बनाना है ना, तो every time उनको हमारे पास आके विजिट भी करना होता है, हमें पता है वो चाह रहे हैं कि हम BLS करवाएं, मतलब हम कोई ब्रांड लिव स्टडी या इस तरह की कोई चीज़ करवाएं जिसमें हम अपने डॉलर्स बर्न करें उनके साथ, और डॉलर्स में हम भी डॉलर में पे करते हैं, तो वो तो ये चाहेंगे कि हम उनके साथ स्पेंड करें. पर आई थिंक ऑल कंपनीज बी वट एवर सेक्टर्स दैट आर देयर, ऑयल, गैस, FMCG, रिटेल, दे आर स्पेंडिंग एज मच एज दैट्स रिक्वायर्ड टू गेट देयर बिजनेस रनिंग. अच्छा, इन दिस लास्ट 1 year or so we have seen के
यूट्यूब एड्स और इवन मार्केटिंग ट्रेडिशनल टीवी मीडिया एड्स, वो हमने देखी है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो उसमें कमी आई है फॉर द ब्रांड्स. पहले हम देखते थे बड़े बड़े स्टार्स उनके साथ कनेक्ट होते थे, अब लास्ट 1-1.5 साल से तो वो कितना परसेंटेज उसमें कम हुआ है इन टर्म्स के हम रेगुलर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें? See, with digital taking over everything, it's a lot cheaper to make a DVC and have it running on your different platforms. DVC बनते हैं, अभी भी बन रहे हैं, not like नहीं बन रहे, और अभी भी हम known recognized faces को लेते हैं, और रीजन उसका ये होता है कि उनकी फॉलोइंग होती है, तो ऑब्वियसली उनको लेना पड़ता है और लिया जाता है. बट ये ट्रेंड थोड़ा सा कम ऐसे होता चला जा रहा है बिकॉज अब जो है मोर देन सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स हैव ऑल्सो पॉप्ड अप and they sort of charge less than the celebrity. So वो एक, it's a mix, it's a low hanging fruit, influencers. So whatever whoever has a better fan following and obviously a good reputation, they are hired. If I ask about the numbers, तो वो कितना परसेंटेज कम हुआ है ट्रेडिशनल TVC से to the digital marketing plus influencer marketing, A lot of brands have done from out of home and all of these things. A lot of brands have done like a 50-50 divide between their DVC. और मगर अभी भी, if I'll be very honest, digital plan बहुत सारे ब्रांड्स में अभी भी वो 60-40 या 70-30 का रेशो है. हर ब्रांड का अपना तरीका है, और हर कैंपेन टू कैंपेन एक्चुअली वेरी करता है, सीजन टू सीजन वेरी करता है. ओके, अब हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे अगर आते हैं तो हाउ डू यू थिंक दैट हैज चेंज्ड द डिजिटल मार्केटिंग इवोल्यूशन? अगर मैं इसको कहूँ कि एक पूरा इवॉल्व कर दिया है उसको, या स्टिल यू थिंक इन पाकिस्तान उसमें भी टाइम लगेगा? Completely change 360 तो नहीं होगा, I think. To be very honest, I think it has changed a lot. 180 तो एटलीस्ट हुआ है, क्योंकि हर किसी के हाथ में फ़ोन है. हर कोई मतलब अब जो है अपना चैनल बना क्रिएट कर सकता है, हर कोई अपनी बात, अपना ओपिनियन वॉइस कर सकता है. मैं और आप भी आज यहाँ बैठे हुए हैं. Exactly. हर किसी के पास एक वॉइस अब है. तो with influencers, people are actually relating to them more because they are like, they're ordinary people. Okay. They're not the ones who have flashy lifestyles. They're not the ones who are different and unachievable. पहले तो टिकटॉक को सीरियस ही नहीं लेते थे ब्रांड्स वाले. हाँ, अब नहीं लेते थे, और अब हम टिकटॉक पर, मैं खुद उसमें से एक हूँ, और अब हम टिकटॉक के साथ काम कर रहे हैं. ओके, बट वो जो एक हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की एक बड़ा एक मेंटालिटी थी, व्हाट आई वुड से, कि वो एक क्रिंज कंटेंट है तो हमारे किसी काम का नहीं है. दैट्स एक्चुअली मी, दैट कॉर्पोरेट कल्चर इज मी. नहीं, तो उसका अगर हम देखें तो व्हाट आई सी के नॉट जस्ट के अर्बन में एग्जैक्ट नंबर्स तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन रूरल एरियाज़ के अंदर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. वी सी मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स जो टिकटॉक के ऊपर हैं, दोज आर नॉट फ्रॉम कराची और सम बिग सिटीज़, वो एक छोटे छोटे गाँव से हैं. तो हाउ दैट हैज़ चेंज द मार्केटिंग गिमिक्स ऑफ brands, like especially the clothing brands? See, to be very honest, I have been the one with this perception, but yeah, that was my perception. और मैंने कई मरतबा टिकटॉक की टीम मेरे पास आई, मैंने ये बात उनको कमेंट मिले भी रहे हैं. अब हम काम कर रहे हैं उनके साथ. अच्छा, टिकटॉक से ना आप लाइक यू सेड कि आपको रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग होते हैं, और वहाँ पे आपको ट्रैफिक वहाँ से आप क्यूरेट कर लेते हो. पर अगेन ट्रैफिक भर जाती है, आपका वेबसाइट का बाउंस रेट भी बढ़ता है, बिकॉज वो सारी ट्रैफिक रेलेवेंट नहीं होती है. तो फिर व्हाट वी रियलाइज वाज कि हम अगर अपना टिकटॉक के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं और अपना कंटेंट लगाते हैं, तो फिर अगर हर उस क्रिंज सेगमेंट से कैसे हटना है, क्योंकि हर किसी का अपना एक टेस्ट है, हर कोई अपनी, it's very, the algo is very customizable depending on what you search, what you saw last, right? So we realize कि मैं वहाँ से ट्रैफिक अच्छी जनरेट हो रही है. But again, for TikTok, for me, it's more of a brand awareness medium than the conversion marketing medium. Because TikTok is very desperate for the Pakistani market as they are banned in India. So after that, they are trying their level best to get into the Pakistani market और वो corporate sector को touch करें. वो कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं. वी आर रनिंग एड्स फॉर ब्रांड अवेयरनेस, कुछ ट्रैफिक अच्छी आ जाती है. बट अगेन प्रायोरिटी वुड ऑलवेज बी मेटा, गूगल, एंड देन मे बी टिकटॉक. ओके, सो यू आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर द इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो? Yes, we are. If I see the Pakistani market versus the Indian market in terms of clothing, Pakistani market is more appreciated in international markets. True. Okay, and especially in I think Canada, UK, US. Okay, Yeah. So how good the numbers are? I won't ask for the numbers, but कितने अच्छे हैं in like 5 years पहले और अब 5 साल के बाद? To be very honest, via.com अभी भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल बिजनेस, अगर एक्सेप्ट फॉर सर्टन ब्रांड्स लाइक J.Dot एंड खादी एंड कपल मोर जिनके इंटरनेशनल स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इवन ऑनलाइन उनकी इंटरनेशनल वेयर हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे ब्रांड्स के लिए इंटरनेशनल बिजनेस हैज़ so far only been 3% of their e-com business.
ओके, एंड व्हाई It इज दैट hasn't सो? really grown. वेयरहाउसिंग की वजह से, वेयरहाउसिंग की लॉजिस्टिक्स की वजह से, प्लस दूसरा ये होता है कि फेसबुक मेटा पे जो है इंटरनेशनल ऑडियंस को टैप करने के लिए जो एड्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और बजट हमारा एक लिमिटेड होता है, तो हम वो इतने एड्स रन नहीं कर सकते. बट अगेन बजट अगर लिमिटेड होता है तो अगेन द प्राइसिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट? Yes, we charge premium pricing on international So store. don't you think that cover the marketing नहीं, वो इतना कवर नहीं करती, इतना because like I said, it's just 3%, इतना कोई खास वॉल्यूम वहाँ से है नहीं. Okay. बट ये है कि ब्रांड टू And is ब्रांड there any channel of logistics site के जो कनेक्ट कर रहा हो पाकिस्तानी मार्केट को with the international DHL does it for Okay, us. but that's I think that's very expensive in terms of के It logistics is expensive, but then वो जो direct premium- channel like customs or anything doing for the नहीं, ऐसा government फिलहाल नहीं, agencies. वो एक्सपोर्ट्स में होता होगा. Okay. ये B2C शिपमेंट्स में DHL करता है हमारे साथ, और उसमें हम जो प्रीमियम प्राइसिंग, जैसे आपने बोला, जो प्रीमियम प्राइसिंग है वो आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कुछ हद तक कवर कर देती है. Oh, okay. So right now it's not as good as the C, but the numbers are improving. They are improving, yes, I would say. ओके. अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर हम देखते हैं अलकरम हो या डिफरेंट कंपनीज हो, उनके जो है वो हम फेक कपड़े कहेंगे या फेक सूट्स हो गए या जो भी फेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो खुलेआम फेसबुक के ऊपर हम देख रहे होते हैं. तो इज़ दैट द थिंग दैट कंपनीज लुक इनटू, और ये जाने देते हैं कि यार छोड़ो इनको, हमारा ही ब्रांड की जो है वो मार्केटिंग हो रही है फ्री में? To be very honest, counterfeit products का we can't do much about it. So for us, we कराची में एक स्पेसिफिक मार्केट है जहाँ पे जो है वो ये इन चीज़ों का, नहीं, मगर पता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके पास काउंटरफेट प्रोडक्ट्स ही हों, क्योंकि ऐसा भी होता है कि होलसेल पे भी तो हमारी चीज़ें जा रही होती है ना, वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज वेल. तो एक होता है कभी के वो डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लैट सेल पे खवातीन लेके रख देती हैं एंड देन दे डू द बिजनेस. एग्जैक्टली. और अगर कोई काउंटरफेट बेच भी रहा है तो अब हमने ऐसा किया कि अपनी प्राइस पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि इतनी सस्ती कर ली है कि अगर आप कोई फेक चीज़ लेने से बजाय, काउंटरफेट प्रोडक्ट्स लेने के बजाय आप ओरिजिनल ले सकते हो. प्लस फेसबुक अब सबके हाथों में, एड्स आप इस तरह से टीजी अपनी उसको टारगेट करते हो कि ऑटोमेटिकली पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअली बाइंग ब्रांड्स नाउ. क्योंकि पीपल आई थिंक हैव रियलाइज कि हम जो किसी कन्वेंशनल मार्केट से जो सामान ले रहे हैं उसकी प्राइस पॉइंट और किसी द वर्ड इज ब्रांड की प्राइस पॉइंट वो मोर लेस सेम ही हो गई हैं. हाँ, वी कैन से दैट. हाँ, तो फिर वो 200-300 रुपए ज़्यादा देख के आप ओरिजिनल ले लें rather than buying fake. Okay, and what about the returns? Like if you want to say the percentage amount, कि कितनी returns अंदाज़न हो जाती है? We try to keep our return percentage and return and cancellations both combined under 6-7%. 6-7%. Yeah. Okay, and is that improving or like It's a उसमें very बढ़ती good जा number रही है? actually. The It's a very good industry number. benchmark is about 10-12% or more Okay, so yours is around 6-7%. combined. और Okay. वो each होते हैं. And what does that have to do with the logistics? अगर रिटर्न्स का अगर मैं बात करूँ, कितना उनकी वजह से होता है, व्हाट आर कस्टमर्स? Like I said, हमने अपना CS टीम को CS ऑप्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो हम पिकअप एडवाइसेस मंगवाते हैं और हम कोरियर लेवल पे भी ये चेक कर रहे होते हैं कि किस स्टेटस के ऊपर कौन सा हमारा पार्सल मौजूद है. Okay. तो उससे ये फर्दर पड़ता है कि हम उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा उनके साथ भी टच में रहते हैं. तो दे कांट गिव अस फेक स्टेटसेस और टेल अस के अच्छा नहीं, कस्टमर नहीं था. फिर हम उनसे मंथली रिव्यूज़ करते हैं. Okay. और रिटर्न रेट जिसका ज़्यादा होता है उसके हम जो उसको हमने शेयर दिया होता है उसका कम कर देते हैं. तो इस वजह से कोरियर भी स्टेज ऑन ट्रैक विद अस. प्लस वी स्टे इन टच विद द कस्टमर एज वेल. दैट्स हाउ वी आर ऑल्सो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने अपना जो ऑर्डर टैट है, वी ट्राई कि 24 आवर्स में ऑर्डर हमारा डिस्पैच हो जाए. 24 आवर्स. तो जितनी जल्दी आपका ऑर्डर डिस्पैच होगा और टर्नओवर टाइम कम होगा तो उतना रिटर्न का चांस कम होगा. अच्छा, इसमें जो है वो अलकरम, स्पेसिफिकली अलकरम जो है वो सारे ऑपरेशंस जो है वो दे आर डिस्पैचिंग के, वो सारे कराची से हो रहे हैं? नहीं, वी आर वर्किंग मल्टी वेयरहाउसिंग मॉडल. लाइक इफ यू सी कि अगर लेट्स से कोई ऑर्डर सखर से आया तो डेफिनेटली सखर में कोई अलकरम के आसपास की कोई ब्रांच ऐसी होगी जहाँ से वो डिस्पैच कर सकते हैं. दैट यू आर रेफरिंग टू Omni समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ. ओके. लॉट ऑफ ब्रांड्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. एट बोनांजा वी ऑलरेडी वर्कड ऑन इट. हम इस वक्त करंटली मल्टी वेयरहाउसिंग पे काम कर रहे हैं. लाहौर में हमारा एक वेयरहाउस है, कराची में वेयरहाउस है. तो लाहौर सेंट्रल के ऑर्डर्स वहाँ से जा रहे होते हैं, साउथ के इधर से जा रहे होते हैं. और हम अब सून, जैसे बोनांजा भी चला गया था, बाकी और कुछ 2-3 ब्रांड्स और हैं जो ऑलरेडी. अच्छा, मैं बोनांजा क्यों बोलूँ, बिकॉज आई वर्क देयर एंड वी डिड दैट बिफोर देयर. दैट्स द रीजन ऑफ मेंशनिंग इट. अब वो स्टोर्स के थ्रू भी ऑर्डर्स राउट करवा सकते हैं. कोविड में भी हमने करवाए थे और अभी भी हम, दिस इज समथिंग वी आर अगेन वर्किंग ऑन, कि जैसी there's a feasibility, so we'll do that again. Okay. And if we see about before I move into the other side of the podcast, what's the trust of customers in terms के हम बात करें कोविड के बाद उसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है. जी. तो स्टिल इफ इज देयर एनीथिंग कि वहाँ पर ट्रस्ट नहीं है कस्टमर्स की तरफ से, या दे प्रेफर इट कि नहीं अब हो गया है?
See, to be very honest, पाकिस्तान में especially मैं I'm not talking about the brands. I know अलकरम पे सब ब्रांड पे ट्रस्ट कर लेंगे कि वो सही चीज़ भेज देंगे. In general, regarding the e-commerce, I'm brick sure and you. mortar would always be 80-85% of Pakistan's economy. And the reason for that is as हमारे पास entertainment के इतने avenues ही नहीं है. तो हमारे पास entertainment क्या है? Shopping, खाना पीना, right? Exactly. So ये बात तो true है. Even for me, despite the fact that I'm working in e-com field के अगर मुझे कोई बहुत expensive चीज़ लेनी है and I have not tried that brand before, I would first want to go and physically check and have a good look and feel of the product. So that is something that we are balancing out now. It has improved, like I said, कि अब आपके business 20% increase. So are you होना शुरू हो working गया है. in like AI or 3D technology, something like that, जहाँ पे वो एक virtual sort of. हमने मैंने अपनी पर्सनल करियर में AR की टेक्नोलॉजी बोनांजा की वेबसाइट के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाई थी. वो उनके मेकअप और मेकअप कैटेगरी के लिए थी ड्यूरिंग कोविड डेज. क्या आप वहीं पे ट्राई करें. जी. विथ क्लोथिंग इज अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज जितने भी कंपनी से हमने कॉन्टैक्ट किया है सो फार वो इतनी एनिमेटेड प्रोडक्ट लगती है कि वो रियल लग ही नहीं रही हैं. इवन कि AI बेस्ड जो फोटोग्राफी वो इतनी एनिमेटेड है कि वो जब तक उसमें मतलब वो उसमें रियल फील नहीं आ रहा. आई नो कलर क्वालिटी टेक्सचर समझ नहीं आ रहा. तो वो अभी तक आई वुड से सक्सेसफुल नहीं रहा. Okay. अच्छा, we have seen Daraz, Foodpanda and many other brands जो कि अब clothing side पे जो है वो ज़्यादा push कर रहे हैं. So what's the amount of percentage that is coming from Daraz and other brands? और उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म से, फिर अपने इसका अलकरम का अपना प्लेटफॉर्म जो है. See, Daraz just example मैं अगर आपको उसको देता हूँ तो for the Foodpanda लास्ट मंथ मैं अपनी मदर की बर्थडे पे वहाँ से मैंने लेट्स ट्राई आई हैड द कूपन ऑफ 10% इन देयर शॉप्स कैटेगरी. तो वहाँ पे द अमाउंट ऑफ सूट वॉज, मैं नाम नहीं ले रहा उस कंपनी का, एक अच्छा नाम था. द अमाउंट जो था उस सूट का इट्स वॉज अराउंड 3500 और वो मैंने फिर उनकी अपनी वेबसाइट पे जाके चेक किया. इट वॉज एक्चुअली 3500 ऑन द वेबसाइट. और जब मुझे 10% उनके पास डिस्काउंट लगा और 2-3 और उन्होंने पता नहीं क्या वो कोई स्कीम्स वगैरह लगाई हुई थी, उसके बाद द अमाउंट आई पेड वाज 1950. सो हाउ दैट नंबर्स कैन बी जस्टिफाइड, इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो वो लोग दे रहे हैं. वो फिर obviously Foodpanda must be bearing the cost of it, and you must have Okay, some. that's what I'm on to do. And you must have some discount voucher or something in your wallet already from beforehand. Okay. That's why वो आपका वो knock off हो गया. अच्छा, with these third party platforms, इनका मसला ये होता है कि वी वर्किंग विद फ्यू राइट नाउ एंड बट अगेन जो आपके जिन कंपनीज का अपना .com हो ना, जो ऑब्वियसली एस्टैब्लिश ब्रांड्स होते हैं, उनका अपने ही चैनल से इतना ज़्यादा दे आर बिजी विद दैट और उनका इतना ज़्यादा रेवेन्यू वहीं से जनरेट हो रहा होता है, दे गेटिंग बेटर ट्रैक्शन आउट ऑफ इट कि ये जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे व्हाट फॉर मी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म इज समथिंग टू सिक्योर मोर आई बॉल्स मे बी. Okay. To get more traffic, more visibility, to increase my visibility. We see now the flagship stores of many brands on their platforms also. Yeah. So मेरे लिए वो visibility increase करने के लिए and anything that's coming from those platforms is an incremental amount for me. Okay. That is not something that I'm banking on. Okay. That is something, it's more incremental to me. I hope my perception changes. And what would be the percentage? Like अगर हम बात करें total sales की जो है hardly 1% or even maybe less. 1%? Okay. 1-2% maybe even less. Okay. And do you think that if Facebook shops or Instagram shopping comes into Pakistan, तो उसमें फिर amount change होगा? Number of sales? वो तो अगेन उसका जो बैकलिंकिंग होगी वो आपकी अपनी वेबसाइट से होगी. अब तो WhatsApp पे भी जो है वो they are starting the shops also. वो उसकी बैकलिंकिंग अगेन आपकी अपनी वेबसाइट अपने ही प्लेटफॉर्म पे होगी ना, तो वो अब अगेन वो अच्छा है. That's good for you. That's good. अच्छा, last question regarding the e-commerce. Where do you see e-commerce in Pakistan in next like 5 years? I see e-commerce. Looking at the current economic conditions. 5 years is a long shot because e-commerce is never evolving. हर 6 महीने में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, to be honest. अगर मैं next 2 years में बात करूँ तो हम कहीं इसको 30-35% बिजनेस शेयर देख रहे होते हैं. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे ग्रो करेगा because it's easier. Do you think that it will overcome the physical existence of the stores? No, that's not going to happen. Not in Pakistan. Not in Pakistan. No, okay. That's not going to happen. Okay. So the not right now, at least for another 5-6 years. Okay. The final phase. How does it feel to have that title of first female head of e-commerce in Pakistan? I think it's just a title. I am who I am. End of the day, after your job, you're sitting with your couple of few friends only. You are with your family. So job आपकी और title जो आपका होता है वो आपने professionally क्या achieve किया होता है वो आपका एक personal
चीज़ होती है. Okay. It does And you're not. also in the top of influential women in Pakistan. On LinkedIn. Okay, On LinkedIn, LinkedIn, that yes. was one thing that happened back in 2021. But I feel those are your personal goals that you achieve and you feel good about them. It's got nothing to do with how I am or around anybody. That's not going to change. And how does that help to change the perspective of the people around you? In terms of what? In terms of कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि खवातीन ये नहीं कर सकती. नहीं, हाँ, ये तो फिर obviously that's breaking women glass empowerment, ceiling. women empowerment हाँ, की that's बात करें. obviously breaking glass ceiling. Like I said, that it has always been a very male-dominated field, and I'm part of that. So it feels really good to be doing all the number crunching and all of that, and it feels amazing. Again, that's a personal self-satisfaction that you provide yourself. But obviously, that does not change you as a person, who you are, what you do. Exactly. And it feels good, and I am very happy that a lot more females are entering into this field. Even within my team, I've got 5-6 girls. I don't know. I think 5 or 6 girls within my team, and I am all about supporting them, and I am all about them challenging themselves. Do you prefer them, or it's just के नहीं, you prefer के कोई भी हो, it's just about working with them? Work is work. It does not has nothing to do with gender. Okay. As long as you can manage the optics and work. And how difficult it is to manage with for a married woman to get into this. And I don't think it changes anything. You just need to have a supportive partner. Okay. That's very important. Exactly. And you need to have a supportive family. And you need to be able to strike the right balance between work and do you think home. that society norms have changed drastically in the last couple of years regarding that? They have, because see, look at the current situation. It's not possible. You can no longer have one income household. वो हमारे fathers के ज़माने में था कि वो कमाते थे और बहुत लोग घर में होते थे, and everybody would do that. And if you want to get your nice bag, or if you want to get like a nice vacation, work. Don't neg somebody else. Your husband can obviously provide you food, clothing, basics. Exactly. But अगर आपको luxuries चाहिए, तो भाई आप खुद काम करें. Okay. And my last question would be, what is an ideal woman for you? I don't think it's a very subjective term, ideal woman for me. I think as long as you're grounded, you have humility, you have empathy, and as long as you are, if people know that they can reach out to you and you will be there for them, I think that's a more human quality rather than any gender. Okay, and do you idolize someone? I actually... In terms of profession or in terms of anything, leadership? That's a very difficult question. I actually do not idolize anyone. Oh, okay. No, and not because I think कोई इस तरह का है नहीं, but I feel कि सबकी अपनी जर्नी होती है. Okay. और आप हमें इस तरह तो I idolize so many people. There are so many women who are already working. Okay. There are so many housewives even who are doing work 24/7. So ऐसे तो you idolize every person who's around you. आप हर किसी से कोई अच्छी क्वालिटी सीख रहे होते हो. किसी से पेशेंस सीखते हो, किसी से आप headstrong होना सीखते हो. Exactly. हर इंसान से कुछ सीखते हो. So how do you think that we can empower women in our society? We can see. सबसे पहले तो हमें दिमाग से ये बात निकालनी है कि वो एक बंदा कमाएगा, वो मुझे वेकेशन भी करवाएगा, मेरे अच्छा, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ. डू यू थिंक कि हमारे यहाँ एक जो एक परसेप्शन है एक वुमेन एम्पावरमेंट का, डू यू थिंक इक्वालिटी वुड बी द मोस्ट वाइजर वर्ड टू यूज़, कि हम एम्पावर तभी कर सकते हैं जब आप दोनों के इक्वल समझोगे. इफ़ यू थिंक कि मर्द ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तब भी मेरे हिसाब से आप एम्पावर नहीं कर सकते दूसरे को. अगर आप समझो कि ख़वातीन को ज़्यादा जो है वो प्रिविलेज मिलें जस्ट बिकॉज के वो ख़वातीन हैं, तो वो भी आप मेरे हिसाब से वो वुमेन एम्पावरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर होता जाता है. डोंट यू थिंक कि वो इक्वालिटी जो है वो होना एम्पावरमेंट के ज़्यादा उसको टारगेट करता है? सी, men and women both have their own gender roles to perform. And when you talk about corporate, I'll truly speak about corporate only. Corporate mein, the work is genderless. As long as there's something that's more physically draining and any individual, I will not name, be it male or female, feel that they're not up for it and they're not able to handle it, that's a different ballgame altogether. But I feel equality in terms of looking at everyone with the same eye as a human being, it's more important. Okay. So what will be your message for young women entrepreneurs and the young girls who are watching you? क्या उनको आप एक मैसेज देना चाहेंगे? आई एम जस्ट आस्किंग यू बिकॉज you have been successful in your career and most of them might be starting their career right now. So what would be the message for them? I think message for anyone who's listening to me would be to make goals and make short-term goals first. And then look for a longer, bigger goal.
and aim for them and work towards it. Okay. And no matter how, if you have all these restrictions, you have, I think obviously हम एक साउथ एशियन सोसाइटी में काम में रहते हैं, तो अलग अलग किस्म के मसाले होते हैं जो बाहर वाले लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ किस तरह के मसाइल कैसे हो सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन के मसले हो सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, इस टाइम के बाहर कर्फ्यू टाइमिंग्स के मसले होते हैं. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर ही निकलो. आप घर बैठ के भी आजकल, तो अगर आपने देखा हो, लोग घर बैठ के ही अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं, लाइव सेशंस कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर. एनीथिंग दैट मेक्स यू चैलेंज योर ओन सेल्फ एंड मेक्स यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड मेक्स यू लर्न समथिंग न्यू, दैट इज समथिंग दैट यू शुड वर्क और एम टूवर्ड्स. अब वो पढ़ाई हो, चाहे वो इवन कुकिंग हो, चाहे वो कोई नया स्किल हो, just try attempting it. Do not think that you are less than anybody else. Just try attempting it. Okay, great. Thank you so much for coming और इतने short notice पे आपको बुलाया. Thank you for and thank you for that and thank you so much viewers. और please subscribe कर दिया गया चैनल को. आप लोग देखते हैं लेकिन subscribe कोई भी नहीं कर रहा होता, तो आप लोगों से बार बार बोलना पड़ता है. Sorry for that. Thank you so much for watching. Keep following us on Facebook and Instagram for the short videos and for the long format videos. Watching us on podcast. You can also listen to the audio podcast on Google, Spotify and Apple Podcast. Thank you so much. Allah Hafiz.